A warm welcome and a great good morning to everyone. So, welcome to Daily News Analysis by Tathastu ICS. Today, we are going to discuss certain topics that have been reflecting in newspaper that will also have a tie up with UPSC current affairs and things, right? So, the topics that we are going to see today majorly of GS2, okay, international relation के बारे में, and also we are just going to see India की ग्रोथ रिलेटेड भी है, ठीक है। GS3 एंड GS2 कॉम्बिनेशन में ही आ रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग अरविंद। सो टुडे those topics will help you in mostly in the mains oriented, जहाँ पर when you are talking about the India's growth and also when you are talking about the geopolitical systems that has been turning over around and what are all the changes that is bringing and the policy and the administrative methods that all over the world is going on, so उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ठीक है। सो बाकी सब बाकी आपका कुछ चीज़ों अच्छा चल रहा होंगे, राइट। यू मस्ट बी स्टडिंग वेल एंड एवरीथिंग। एंड ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे आज अपलोड हो जाएगा। सो उसको अवेल करने के लिए यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड एंड यू हैव टू ज्वाइन द तथास्तु टेलीग्राम चैनल। गुड मॉर्निंग सोनाली। एंड इसके अलावा आपको क्या हो जाएंगे, सेशन के बाद जब भी ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएंगे उसमें एक मेंस क्वेश्चन भी मैं आपको ऐड करके दे दूंगी। एक बार उसमें लिख के यू कैन रीपोस्ट योर आंसर्स, ठीक है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो आज देर आर सर्टेन टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर करंट अफेयर्स, ठीक है। सो उसमें एक है, first one is about Article 142. So Article 142 is special power for Supreme Court, ठीक है। So whenever there is an existing laws there and at certain point of time this Article 142 will be used, ठीक है, immediate solution देने के लिए। अगर नहीं है तो कुछ pending चीजेस को जल्दी निपटाने के लिए this special power will be used, Article 142, ठीक है। So that we are going to see why अभी 142 in the news, ठीक है। एंड दिस विल बी स्ट्राइट अवे इन आर प्रीलिम्स फैक्ट में हो जाएंगे एंड स्पेशल पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आपको आ जाएंगे। इन कंपैरिजन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जो फर्क पड़ता है वो सारा चीज हम इसमें देखने वाले हैं, क्लियर। सो GS2 पॉलिटी में हमारी ये हो जाएंगे। एंड द सेकेंड वन इज अबाउट गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। सो दिस एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट जो MG नरेगा था पहले एंड नाउ इट हैव बीन रीलेबल्ड एज VBG रामजी, राइट। सो उसका परफॉर्मेंस अभी कैसे है उसी बेसिस पे एक एडिटोरियल आया है। वी आर जस्ट गोइंग टू सी व्हाट इज द परफॉर्मेंसेस एंड व्हाट आर ऑल द गैप्स एंड हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू सी। सो एज इट इज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, देयर इज little spelling error, PLOYMENT, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पर क्या है, वी आर जस्ट गोइंग टू सी इट इन द GS3 पेपर, क्योंकि हमारी एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एम्प्लॉयमेंट अभी एक नया स्कीम आ गया है, राइट। सो अर्लियर द MG नरेगा का फैक्टर्स क्या है, अभी VBG रामजी का वो फैक्टर्स क्या है, ये सारा चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो GS3 में यू कैन इवन कोट दीज काइंड ऑफ लाइक डेटास इन योर GS1 पेपर सोसाइटी में व्हेनेवर इट इज कमिंग अराउंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो सोशल जस्टिस में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दीज डेटास यू कैन यूज इट ओवर देयर एज वेल इन योर मेन्स आंसर्स, ठीक है। द थर्ड वन इज टाइम टू पुश बैक। सो दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, यूएस ने अभी इंडिया में एक एक्विजिशन रखा है, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग टू सी व्हाट बेसिस दोस acquisition and also what India is doing right now based upon that we are going to see. Again it is between US and India, so it is GS2, ठीक है, my bad, it is GS2, ठीक है। सो द रिलेशंस एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इशू, जहाँ पर इंडिया की इसमें इकोनॉमी का पार्ट भी थोड़ा बहुत हल्का सा आएंगे हमारे पास, ठीक है। सो देयर इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन GS2 एंड GS3, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज अबाउट कार्बन टैक्स। हमें पता है EU में जो भी वो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होता है EU के लिए, राइट। सो whenever we export something to EU, European Union, there is a strict law that has been followed for those carbon emissions and environmental friendly products, right. So that is what we are going to see. The BRICS
the BRICS countries in their 12th meet, they have discussed something. Okay, so that what we are going to see it from this article. So this will be in a GS3, also GS2, क्योंकि वो ब्रिक्स है इसलिए, बट द कंटेक्स्ट दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट विल इम्पैक्ट इन अ GS3 पेपर. ठीक है. द फिफ्थ वन इज अबाउट द बियॉन्ड अमेरिका. दिस इज एक्चुअली अबाउट the current situation in the West Asia and the relation with US and the West Asian countries. क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, इंडिया का यूएस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट क्यों इंडिया के अलावा जो भी है वेस्ट एशिया और यूएस का हम देख रहे हैं, क्यों हमें पढ़ना है? क्योंकि वेस्ट एशिया में हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं एंड वी हैव मच रिलेशंस आल्सो विद देम इन केस इफ देयर इज एनी. ठीक है, हम वेस्ट एशियन साइड थोड़ा सा हम इंक्लाइन हो रहा है तो बिकॉज ऑफ आवर एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल परचेस फ्रॉम देयर, अगर हम उनको थोड़ा सा इंक्लाइन करके सपोर्ट करेंगे तो यूएस तुरंत हमारे पास सैंक्शंस डाल देते हैं, बी इट प्राइमरी और द सेकेंडरी सैंक्शंस जो भी हो सकते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो वी कैन नॉट लाइक इग्नोर यूएस एंड वी कैन गो विथ वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड मतलब वैसा वर्षा भी हम नहीं कर सकते हैं. We cannot be inclined with US also. So balanced रखने के लिए we should understand the issue going around us and इसके अलावा जहाँ पर हमारी major support मिल जाता है और major necessity products and the necessity things are been coming from which country, वहाँ पर भी हमें मतलब along with all those गुड थिंग्स इन द एडवांटेज फॉर इंडिया, ये सब कुछ कैलकुलेट करके ही हमारी फॉरेन पॉलिसी एंड द अप्रोच हमें देखना ही पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि हम डाइवर्सिफिकेशन देखने लग गए हैं बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ऑयल परचेज बहुत मुश्किल हो रहे थे ईरान से एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉकेड हो गया था, हमें ऑयल सप्लाई नहीं मिल रहा है एंड अगर उसके अलावा भी अगर हम रशिया के पास ज़्यादा होंगे तो सैंक्शंस लग जाएंगे. सो इसलिए हमने क्या किया और जहाँ पर हमने डाइवर्सिफाई कर लिया. सो उस तरीका से हम प्लान करने के लिए ये सारा चीज हमें पता होना चाहिए. क्लियर टिल नाउ व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस? ठीक है, गुड मॉर्निंग हर्ष. सो अभी तक कोई भी डाउट और कोई भी दिक्कत है तो बता देना, वी विल बी लाइक आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, चलिए. सो द फर्स्ट वन इज अबाउट आर्टिकल 142. ठीक है, अब भी हमें पता है जंतर मंतर में और जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ है ना. सो बेस्ड अपॉन दैट राइट नाउ द सीजेपी का पहले चीज है, दे हैव आस्क्ड फॉर लाइक कि हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब वन ऑफ द डिमांड इज दैट कि हमारी स्टूडेंट्स के ऊपर FIRs फाइल नहीं करना है. राइट, सो उसके लिए क्या हुआ था, देयर वर n नंबर ऑफ केसेस हैव बीन पुट फोर्थ बाय द दिल्ली पुलिस एंड दैट हैव बीन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टुक द आर्टिकल 142 क्योंकि वो जो भी इशू था रिलेटेड दिस FIRs that was keep on pending. So आर्टिकल 142 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ पे लिए है and they invoked this आर्टिकल 142 and they gave it a immediate solution उनको देने के लिए. ठीक है, so what they have did using article 142, they have struck down all those FIRs against the students in like कुछ लोगों को 2000 लोगों were not the students, they were serious person who are involved in the serious crimes and things. ठीक है, उनके अलावा बाकी जितना भी स्टूडेंट्स है उनका FIRs को इन लोगों ने स्ट्राइक डाउन कर लिया है. ये स्पेशल पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, आर्टिकल 142 इसको इनेबल करता है. सो जनरली व्हाट इट इज, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास हो जाएंगे, दैट ऑल्सो वी विल बी सीइंग वन बाय वन. सो द कोर इशू इज जो भी नीट यूजी पेपर लीक के लिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पेपर लीक के अगेंस्ट के प्रोटेस्ट किया, उन बच्चों का FIRs इन लोगों ने स्ट्राइक डाउन कर लिया. सो कैसे इन लोगों ने मतलब तुरंत इसको immediately resolution दे दिया थ्रू आर्टिकल 142. सो आर्टिकल 142 इज बीइंग गिवन बाय the constitution for the Supreme Court, which empowers the Supreme Court to pass any decree or order necessary for doing complete justice. It is not about suggestion or something, it is about complete justice. जहाँ पर उन्होंने straight away students के against जो भी FIRs है उन्होंने completely इसको nullify कर लिया, मतलब strike down कर लिया. right, so ये complete justice दे सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। सो इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, acting as a mechanism to fill legislative gaps where existing laws fail to provide a specific remedy. So तुरंत उनको specific remedy देने का, जो एग्जिस्टिंग लॉज वो मिस कर रहे हैं, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट अपना 142 आर्टिकल यूज करके, स्पेशल पावर यूज करके क्या कर सकते हैं, दे कैन गिव द इमीडिएट रेमेडी, इमीडिएट जस्टिस टू दैट प्रॉब्लम, ठीक है, ताकि ये प्रोलॉन्ग नहीं होते जाते हैं, पेंडिंग को तुरंत खत्म कर जाते हैं। एंड इट इज मेनली यूज्ड फॉर वेरी सीरियस इश्यूज विच विल बी हैविंग, अगर हम उसको अभी खत्म नहीं करेंगे तो फॉर ईयर्स एंड ईयर्स इट विल बी गोइंग ऑन। सो उस काइंड ऑफ सीरियस नेचर को उन लोगों ने आर्टिकल 142 यूज करके सुप्रीम कोर्ट विल गिव द इमीडिएट जस्टिस। क्लियर टिल नाउ, एंड इट इज बाइंडिंग, nobody can change it also, ये याद रख लेना। this power is naturally available to the supreme court because of its role as the गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है हाईएस्ट अपील कहाँ हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में हो जाता है, राइट। सो द फाइनल वर्डिक्ट वुड बी सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट विल बी, जब भी आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है, देयर इज एनी इश्यूज इन योर लाइफ, यू कैन चैलेंज इट इन द कोर्ट्स, जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, अपील के लिए हम जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने आप इतना आसान से नहीं जा सकते, दैट इजीली यू कैन नॉट गो देयर, राइट। बट देर आर फॉर द फंडामेंटल राइट्स, एंड ऑल्सो व्हेन देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर that will be disturbed in Indian society, definitely you can go to the Supreme Court straight away and you can fight for it, right? So this is what the thing is, they are trying to say it as guardian of the constitution, basic structure and और fundamental rights को जब भी कोई भी हो रहा है, तुरंत Supreme Court will be coming and Supreme Court will be guarding that amendments and everything, right? So that is what they are talking about here. It allows the court to be beyond strict procedural rules when necessary to prevent serious injustice and ensure justice is done, ठीक है। The supremacy over ordinary law, ये पहले बार नहीं हो रहा है, कई बार हो चुका है, ठीक है। सो जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी इन लोगों ने कॉम्पनसेशन के लिए ये आर्टिकल 142 उठाया, एंड दे हैव गिवन फॉर द इमीडिएट सॉल्यूशन, ठीक है। एंड अलोंग विद दैट दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में भी, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस पावर इज ऑफ एन entirely different quality and statutory restrictions contained in ordinary laws cannot limit the constitutional powers of the court under article 142. so यहाँ पर क्या हो रहा है, so there is like special powers and it cannot be taken out from the court by any legislative means, ठीक है। सो द आर्टिकल 142 एंड द डिफरेंस बिटवीन हाई कोर्ट, सो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 है, इमीडिएट सॉल्यूशन उन्हें दे सकते हैं, बट इफ यू आस्क लाइक हाई कोर्ट को भी ऐसा ही है, नो, हाई कोर्ट डज नॉट हैव दिस आर्टिकल 142, इंस्टेड दे हैव 226 वेयर, जहां पर इन लोगों ने रिट को देने के लिए अलाउड है, बट दे कैन नॉट गिव द कंप्लीट जस्टिस एज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो इन 2009 in Anil Kumar Jain versus Maya Jain, the Supreme Court have clearly said that कि high courts under article 226 do not have the same wide and extraordinary powers as the Supreme Court has under article 142, जहां पर इन लोगों ने क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैन गिव द अल्टीमेट justice to them, right? But good morning Shanu, but the Supreme Court cannot give it. Article 226 gives high courts broad powers to issue writs, ठीक है, सिर्फ writs इन्होंने दे सकते हैं, not the okay 142 का वो स्पेशल प्रोविजंस है, वो हाई कोर्ट के पास नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। So this is the thing that we have to see here, okay? So इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा, so is it with the article 142 कहाँ पर यूज करता है, किस चीज के लिए यूज करता है, ठीक है। पहले चीज ये है, when there is a very serious issue that have to be addressed immediately, so give the immediate justice and to complete the law, complete the पेंडिंग, मतलब जो प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए जो भी केस है, उसको एकदम ही कंप्लीट जस्टिस देके खत्म करने के लिए वो आर्टिकल 142 स्पेशल प्रोविजन विल बी यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, राइट। ये सेम प्रोविजन हाई कोर्ट के पास नहीं है, दे कैन ओनली गिव द रिट्स थ्रू आर्टिकल 226, बट 142 इज कंप्लीटली कन्फाइंड ओनली विथ whom the सुप्रीम कोर्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? इज देयर इज एनी डाउट? चलिए द नेक्स्ट वन,
it is about employment guarantee has slipped into limbo. The problem here is, हमें पता है MG नरेगा जो guaranteed work है, right, based upon the wages and everything, people will be giving, the rural people majorly focused upon giving the employment through this scheme, right? So क्या हो गया था उस टाइम, तो ये राइट बेस्ड था. व्हेन इट वाज एमजी नरेगा इट वाज राइट बेस्ड. जब भी मैं रूरल लाइक सिटीजन होती हूँ, if I am a rural citizen, okay, I will be having the rights to get. Strategy has released methyl ice. Yes बेटा, ठीक है. सो यहाँ पर हमें क्या देख पा रहे हैं, द थिंग इज लाइक वी आर एबल टू सी, जब वो एमजी नरेगा था राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट था, राइट. सो वेन एवर आई गो ऑन आस्क फॉर वर्क, दे विल बी गिविंग द 100 days वर्क, राइट. बट बेसिकली वो इवेंचुअली क्या हो गया, बिकॉज द एक्सपेंडिचर्स वर गोइंग ऑन, but there is no proper workings and things, so that's why there were some modifications and it have been transformed into VBG Ramji, right. So this was the scheme name that have been Vikshit Bharat Gramin Rural Employment and things, right. So क्या हो गया है अभी, जब MG नरेगा था उसमें फंड्स थोड़ा सा 90 crore के आसपास है, ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू VBG Ramji, the funds have been raised up to 1.5 lakh or 1.5 lakh crores as well, right. So थोड़ा सा ये फंडिंग्स भी बढ़ गए हैं, एंड दे हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर्स ऑल्सो, राइट, एम्प्लॉयमेंट्स एज वेल, राइट. पहले तो 100 days है, लेकिन 125 days जैसे हो गया है, राइट. सो डिमांड बेसिस्ड से राइट बेस से इन लोगों ने डिमांड बेस्ड में लेके आ गए, राइट. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एमजी नरेगा एंड वीबीजी रामजी, राइट. सो यहाँ पर हमें क्या देख पा रहे हैं, इतना चेंजेस लेके आने के बाद, इतना हाईएस्ट फंडिंग देने के बाद भी हमें देख पा रहे हैं द एम्प्लॉयमेंट रेट, ओके, हैव बीन डिक्लाइंड ऑलमोस्ट 43%, ठीक है. इसका कारण क्यों है, क्योंकि द कंटिन्यूस डिक्लाइन हैज बीन सीन ऑलमोस्ट 50%, नियरली 50% का डिक्लाइन आ रहे हैं. अगर हम देख रहे हैं क्यों, पहले चीज ये VBG रामजी का वो जो भी अपडेट्स हैं दैट हैज टू बी कम टू द इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2026, ठीक है. लेकिन गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी विद द बेसिक procurements and the basic plan. The clarified plans was not with them, and detailed plan is also not with them. So क्या हो गया, वो May 22 पे वो अनाउंस हो गया था, and from that day it have been came into the effect, राइट. सो वहां पर क्या हो गया, ऑलरेडी हमारे पास प्रोक्यूरमेंट्स कम है, एंड वी आर नॉट हैविंग द प्रॉपर इंटरलिंक्ड डेटा एंड थिंग्स, ठीक है. वहां पर भी थोड़ा सा ऐसे हो गया कि दे वेर लाइक इन नंबर ऑफ पीपल हु लेफ्ट विथ लाइक प्रॉपर आउटकम ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है. लोग आ रहे हैं, दे आर टेकिंग द मनी, एंड अटेंडेंस के वजह इट वाज वेरी लीनियंट अटेंडेंस, सो पीपल आर नॉट कंप्लीटिंग द वर्क, इंस्टेड दे आर टेकिंग द मनी एंड दे आर गोइंग फॉर देयर फार्म वर्क्स अगेन, ठीक है. बैक अगेन दे आर गोइंग बैक टू देयर एग्रीकल्चरल वर्क ओनली, सो विच इज शोइंग दैट अ शार्प decline in these areas, and that is showing the failure of like setback in the VBG Ramji, ठीक है. So that is what we are discussing here. So when we are able to see it, okay, यहाँ पर वो एक्सक्यूज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में क्या दिया था, to attribute this setback to the fact that a few states explicitly suspended VBG Ramji in parts of July under section 6, ठीक है. And for one thing, these states account for a small share of total MG Narega employment, and the July 2026 decline looks much the same in proportionate term when these states are left out. So यहाँ पर लोगों ने क्या कर रहा है, जो डिक्लाइन हुआ था इसका एक रीजन है, certain states they didn't go up with what this VBG Ramji, instead they were trying to stick with MG Narega only, and it is okay that have been given the drip in the what the employment and also the outcome of this scheme, ठीक है.
So that is what the Ministry of Rural Development have given, but we will be see some more also. Some background may help. A bill paving the way for replacement of MG Narega, okay, was rushed through Parliament in December 2025. The Rural Development Minister announced at the time the replacement would take place on April 1, 2026, right? However, nothing of the sort of happened on April 1 क्योंकि हमारे पास उस टाइम वो practically, logistically and plan wise we are not ready, our government, ठीक है. So on 20 बाय डिफॉल्ट एमजी नरेगा उस टाइम तो वो जा रहा था, ठीक है. एंड May 2020 to 2026 द मिनिस्टर रिलीज्ड ड्राफ्ट वीबीजी रामजी रूल्स फॉर पब्लिक कंसल्टेशन. These rules are mainly a rehash of MG Narega rules and orders. Release of the final rules began at the end of June, just on time of the official replacement of MG Narega. So यहाँ पर हमें क्या देख पा रहे हैं, the ground realities जहाँ पर हम देख रहे हैं. So the fault मतलब the delayed process is because of not readiness of whom, the particular government, right? So that is what they are trying to say here. And also if you see here, during the first 3 months of this financial year कंफ्यूजन प्रिवाइल्ड, क्योंकि अप्रैल में शुरू होना था वीबीजी राम जी, लेकिन क्या हो गया उसमें बात मई में शुरू हो गया था. सो बीच तक जो भी डेटा है और जो भी आउटकम है उसको कहाँ से कैसे कैलकुलेट करना, दैट इज अ मेजर इशू. Conflict between center and the state on distribution of funds for its implementation. Yes, when we are talking about the distribution of funds, beta, earlier MG Narega में हर्षा ऐसे हुआ था कि earlier it was whenever the fund has been asked to like implement these employment schemes and things, the center used to give the state the whatever the amount has been asked by the state, additional funds also was provided. But once the VBG Ramji have been came, the problem here have been splitted, like there will be already a cap limit, okay. So cap limit के साथ ही इन लोगों ने फंडिंग्स दे देंगे और इसके अलावा एक्स्ट्रा फंडिंग्स आप नहीं ले सकते हैं फ्रॉम सेंटर. सो इसके अलावा अगर आपको फंडिंग चाहिए तो स्टेट ही देना ही पड़ेगा, सेंटर से आपको नहीं मिलेगा फॉर स्पेंडिंग ऑन दिस VBG Ramji, ठीक है. So based upon the fundings you have to allocate the works whenever it is needed. So sometimes क्या हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाता है एंड द स्कीम्स ऑल्सो विल कम बट द फंडिंग्स विल बी लिमिटेड. सेंटर विल नॉट बी प्रोवाइडिंग द excess funding also, as I have told you, right? So that is what the disruption, that is what happening between center and the state. ये क्लियर हो गया आपको? चलिए. So the next one is about what we are able to see here is the dip, ठीक है. So MG Narega is normally at a peak during these summer months. The limbo continued in July 2026 when VBG Ramji made a flattering start. In 2024, 25 and 25-26, the first 4 months of the financial year accounted for nearly 50% of the annual employment generation. यहाँ पर आप एक बार देख लेना, 128 crore से हमें लास्ट में क्या मिला, 70 crore पर पर्सन एम्प्लॉयमेंट हमें मिल गए हैं, ठीक है. सो इफ यूर सी लाइक 128 crore ऊपर है, वहां से हमें डिक्लाइन होते होते क्या हो गया, 70 crore पर्सन पर डे के हिसाब से हमारी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन श्रिंक होते जा रहे हैं. ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. सो if you could see 128 crore and 119 crore person days respectively in 2026-27. However, MG Narega and VBG Ramji generated only 70 crore persons day of employment in the same months, a decline of 43% from the average of preceding 2 years. Employment declined in all major states, but the decline was far from uniform across states, ठीक है. So अगर हम इसी में देख रहे हैं तो we are able to see, ठीक है. So there is a complete decline, okay. Almost clearly there was a n number of declines throughout the states, ठीक है. So it is not about only one state or two state, major of the states are going for the decline only when it comes to employment generation, ठीक है. Andhra Pradesh, Assam and Telangana, but larger than 40% in most states it have been a decline, ठीक है. So
in 10 out of 19 major states, the decline ranged between 60% and 85%. अगर हम देखेंगे तो why it has been serious, क्योंकि rural background is one of a strong base for, okay, rural employment is one of the strongest means for India for the growth, right? ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहाँ पर हो रहा है, अलाइड एग्रो बेस्ड अलाइड एक्टिविटीज भी वहाँ पर हो जाते हैं, और इसके अलावा फॉर दोज सिटी प्लानिंग एंड एवरीथिंग, हर चीज शुरुआत रूरल से हो जाता है. रूरल इकोनॉमी एंड द बैकग्राउंड इज नीडेड. अभी भी जब भी आप देखेंगे तो द रूरल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट इज ओके वेरी लेस कंपेयर टू अर्बन एरियाज में. अगर आप देखेंगे तो द ग्रोथ एंड ऑल्सो द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज मच हायर देन द रूरल, क्योंकि जब भी उन लोगों ने रूरल खेती करते हैं और इसके अलावा जो भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड काम करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग जो भी है, ठीक है, दैट इज ओनली फैमिली बेस्ड एंड इट इज नॉट ब्रिंगिंग द आउटपुट फॉर द कंट्री, ठीक है, इट कैन नॉट बी काउंटेड. सो उसके लिए हम, एंड देर आर सम पीपल जैसे कि फीमेल्स जिनका वो कंप्लीट वर्क फोर्स अनअकाउंटेडली जा रहा है इन द फैमिली लैंड वर्क्स एंड थिंग्स, ठीक है. सो उसको वुमेन को एंड द रूरल यूथ को कंप्लीट वर्क फोर्स में लेके आना है, द वेज्ड वर्क फोर्स में लेके आने के लिए उन लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिकॉज एग्रीकल्चर अभी थोड़ा सा डिक्लाइन होते भी जा रहा है. सो पीपल आर गोइंग विथ नो वर्क एंड दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अर्बन एंड इट इज इंक्रीजिंग द रैपिड अर्बनाइजेशन एज वेल, ठीक है. सो उसको बैलेंस करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दोज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स एंड थिंग्स. सो अल्टीमेटली इफ इट इज नॉट ग्रोइंग, क्योंकि फंड्स के साथ भी, इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ भी एंड अपडेशंस के साथ, इट इज सपोज टू गिव अस अ हाईएस्ट outcome, which is the increment in the employment generation, but instead it have given us the decline. So why we are facing it, we are just going to see it, okay. So that will be heavily impacting on India's economy and also the growth, okay, क्योंकि MSME के साथ साथ one of the major impact will be of the rural employment. अगर rural employment decline हो रहा है तो that will impact much more, ठीक है. So क्या हो जाता है अगर रूरल में employments come, and if you're the separate section of the youth will be going unemployment and they will not be having any other skills as well, right? So that is what the major thing. So if you could see, the article highlights a sharp decline in rural employment generation during the transition from MG Narega to VBG Ramji, despite the new scheme being introduced with a higher overall budget, which we have discussed. Employment generation during April to July 2026 has fallen significantly, jahan par nearly 50% of the decline, okay. The author argues that the main problem is not merely temporary disruption, but poor planning, delayed rules, administrative confusion, and the possible implementation. So these are the major issues why हमारी decline हुआ है. First thing is about the poor planning. So poor planning अगर आप देखेंगे तो as we have told that इतना जो एम्प्लॉयमेंट, मतलब पहले हमें एक डेटाबेस होना चाहिए, राइट, उस हिसाब से हम काम अलोकेट कर सकते हैं और फंडिंग्स भी अलोकेट कर सकते हैं. लेकिन पुअर प्लानिंग, क्योंकि पहले लॉजिस्टिक्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम रेडीनेस भी नहीं है, एंड व्हेन वी आर ऑल ऑफ अ सडन व्हेन वी आर ट्राइंग टू पुट ऑल दोस न्यू स्पेक्ट्रम ऑफ rules, that will not be like immediately acceptable, right? So that is what the poor planning and delayed rules, administrative confusion, क्योंकि जो भी वो गैप पीरियड था फ्रॉम अप्रैल से, ठीक है, एंड मई तक, बीच में जो भी वो ब्लैकआउट पीरियड और गैप पीरियड था, वहां पर जॉब भी नहीं है और एम्प्लॉयमेंट का जो भी आउटकम है थोड़ा बहुत, दैट ऑल्सो कहाँ हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज वॉज ऑल्सो देयर. सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन एंड possible implementations नहीं है. All of a sudden overnight if we are asking for it, then it is not happening, right? So these are the things, and there is particularly worrying for poor states where rural households depend heavily on guaranteed employment during periods of low agricultural activity. So जब भी हम देखेंगे तो, ठीक है,
सो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, अलाइड एक्टिविटीज भी हो जाता है जहाँ पर बहुत कोकोनट का पेड़ होता है, राइट. सो द कोकोनट फॉर्म्स दे गो फॉर लाइक ब्रिंगिंग दोस कोकोनट्स डाउन, ठीक है. एंड अलोंग उन लोगों ने ज़्यादा कमाते नहीं है. और इसके अलावा व्हेन यू लुक आउट फॉर दीज बनाना ट्रीज, है ना, साउथ में ऐसा होता है, बनाना ट्री का प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड देर विल बी इवन स्कूल स्टूडेंट्स विल बी गोइंग टू लाइक हार्वेस्ट दोज बनानास, ठीक है. सो इट इज़ अबाउट लाइक द एम्प्लॉयमेंट which we have to produce there will bring out, and in case if their livelihood is completely based upon the employment which is been given by these kind of schemes, then it is obviously government's liability to take care of these people and also to take care of their employment, timely employment as well. Because majorly as I have told you, पहले तो वो बहुत बड़ा बड़ा वो खेती था, राइट. सो द फार्म्स हो जाता है, कोकोनट फार्म्स, और नहीं तो ये बनाना प्लांटेशन वगैरह हो जाता है. बट आजकल क्या हो गया, इधर दे आर लाइक गोइंग फॉर सेलिंग द लैंड्स, और एल्स क्या हो जाएगा, वो रिसोर्ट जैसे बन जाएंगे, राइट. सो बिकॉज ऑफ प्लॉट डाल के लोगों ने देते थे, सो दे आर विद reduced employment opportunities in rural areas. So their major livelihood is based upon this schemes. So agar there is a decline in the employment through these schemes, that will definitely affect the rural growth, ठीक है. चलिए, सो 50% एस्टिमेट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ प्री मेच्योर फिगर, जहाँ पर 7.7 crore person days for July 2026. The latest figure is 8.3 crore and the final figure is likely to be around 9 crore according to the Ministry of Rural Development. So यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, we have to focus upon one thing which is bringing employment, and we should be like giving the support to the rural youths as well, ठीक है. So it is not only about the rural area, wherever it is needed, India with their government, with its government, it have to put forth those plannings, ठीक है. So clear till now, is there is any doubt? यहाँ पर डिक्लाइन के लिए रीज़न ये है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, ठीक है. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन ज़्यादा था, कब से कहाँ तक हमें उसको एमजी नरेगा में कैलकुलेट करनी है और वीबीजी रामजी में कैलकुलेट करनी है. और इसके अलावा द फंडिंग्स का भी इश्यूज हो जाता है, क्योंकि व्हेन द इवन हायर फंडिंग्स हैव बीन गिवन, इसके बाद भी हमें वो लाइक ये नहीं दे पा रहा है, राइट, एम्प्लॉयमेंट. सो व्हाई इट इज दैट shows that poor implementation in, and also the bureaucratic bottlenecks is also there. That is what it is showing. Clear? चलिए, so time to push back. So क्या हो गया था basically, this editorial is talking about one thing, जहाँ पर इंडिया को भी one of a few of a countries में यूएस ने बता दिया, India is also one of a thing embodied to make increasing demands on India. So जहाँ पर actually United States have like raised accusation on India that we are okay, like we are importing the Chinese products and we are exporting it to the US with much lesser tariffs, ठीक है. So generally क्या हो जाता है, Chinese की products है ना, whenever it straight away goes to US, there will be huge tariffs will be put on, ठीक है, ठीक है. tariffs will be put on those Chinese products. So like in sometimes what happens is China will be Chinese products will be imported by other country, ठीक है, मान लेते हैं इंडिया, एंड यहाँ पर रीअसेंबल और कोई और थोड़ा बहुत काम हो जाएंगे, एंड वी विल बी लाइक एक्सपोर्टिंग इट टू यूएस. सो क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट विल बी आइडेंटिफाइड एज इंडियन प्रोडक्ट, राइट. सो यहाँ पर से हमें क्या मिल जाएगा, लेस टैरिफ मिल जाएंगे, ठीक है. So but when we see the ultimate thing, the core thing, it would be of Chinese product only, right. So this is what the US is saying, ki India is also one of the country who is bringing Chinese products into US with lesser tariff, which is a disadvantage for US government and economy, right. So अगर हम देखेंगे तो ठीक है,
The latest accusation levied by the United States against India has a potential to be the most harmful to the Indian economy. Reason, क्योंकि अगर इसी basis पे why it is harmful to Indian economy, इसी basis पे अगर US इंडिया की exports को इंडिया के exports towards US को बंद कर लिया, नहीं तो heavy tariffs लगाने के लिए शुरू कर दिया है, तो then it is a huge setback for India, because we are supposed to pay lots of tariffs so that we will be like giving out all the dollars, okay, एंड फॉरेक्स इम्बैलेंसेस हो जाएंगे एंड करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होते जाते हैं. ये पहले चीज़ है इम्पैक्ट. एंड द सेकेंड थिंग इफ वी आर एबल टू सी हियर इज, इन केस इन्होंने कंप्लीटली हमारी इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया, तो वन ऑफ अ लार्जर ट्रेडिंग पार्टनर इज यूएस फॉर इंडिया. सो व्हेन दोज प्रोडक्ट्स आर बीन like banned by US, and it may affect other trade as well, and also the US allies also will be asked for banning Indian products, and it will be coming back to India. India का growth वहाँ पर भी हट जाएगा, right? So that whenever we are not exporting something and we are keep on importing something from other countries, that will be impacting India. ठीक है? So these were the things that we are talking about the impacts in Indian economy. ठीक है? So US का ये वाली है ना आइडिया कि हम चाइना का प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और उसको थोड़ा सा रीलेबलिंग वगैरह कर रहे हैं, एंड वी आर डायरेक्टली एक्सपोर्टिंग टू चाइना, राइट, सॉरी यूएस. सो ये वाला चीज इंडिया में पार्शियली है. जैसे कि अर्लियर हम फिनिश्ड गुड्स को लेके इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम री एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट द प्रॉब्लम इज सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली नलिफाइड द टैरिफ्स, राइट, ठीक है. सो बट द प्रॉब्लम हियर इज अबाउट व्हेन वी सी इंडिया का अभी फिनिश्ड, इंडिया इज नॉट गेटिंग फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम चाइना. इंस्टेड इंडिया में जो भी वो प्रोडक्शन होता है उसके लिए द रॉ मटेरियल्स और इनपुट गुड्स विच वी कैन से इट एज अ कैपिटल गुड्स. ठीक है, अगर कार मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहे हैं तो इनका व्हील की अलॉयज हो जाता है, राइट, एंड ऑल्सो सर्टेन लेदर प्रोडक्ट्स फॉर एन एग्जाम्पल. ठीक है, so the leather products that we are getting from China as a capital good, and here we are processing it and making it as a final good as a car, and we are we are sending it to US, right? So वहाँ पर क्या हो जाएगा, Chinese का product of leather will be there with Indian product, but it is a intermediate good, it is not a finished good. So अगर finished good के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो then the tariffs higher is okay, but just because we are using the intermediate goods, in case for that also if we are banned with exports and if we are levied with heavier tariffs, that is not the right thing, right? So that will impact India in a very broader way. As I have told you, lots of tariffs will be given out, it will drain our forex reserves, and also current account deficit widen हो जाता है. And in case if we are completely banned with the exports, and because we are still having imports are major in India, okay, so वो balance out नहीं हो जाता है, exports नहीं हो रहा है, सिर्फ हम import ही कर रहे हैं, तो हमारी balance of payment and balance of trade will be declined, and debt trap and economy fall, rupee depreciation, all these are the things that will be happening when we are not able to export anything to other countries. Okay, so these are the serious issues that we are discussing here. Okay, so till now there is no particular tariff have been like introduced for India or something, but it is necessary for India to take a step ahead and confirm it कि India ऐसे वाली चीज नहीं करेंगे. India is not like giving out the Chinese products in the name of India, but we are using Chinese products at times क्योंकि हमें cheaper cost पे मिल जाएंगे those products. So उसको हम intermediate goods जैसे लेके इसको processing करके the finalized products will be made in India, then only we are giving it back to US, right? So that is what the thing that we have to clearly mention, otherwise we would be end up with lots and lots of what the like tariff burden. ठीक है, so here, so White House report naming around 40 countries in all has said that India ranks among the top enablers of China's evasion of US tariffs. So यहाँ पर क्या हो रहा है, just because we are exporting the
products that has been मतलब manufactured or produced with Chinese goods, it is showing that कि China's evasion, US का tariffs को China is evading all those tax and tariffs. So उसको enable करने का, उसको help करने के लिए India is one of the top most country. वही acquisition क्या US ने हमारे India के ऊपर रख दिया है, ठीक है. So the accusation is that India and these other countries are importing Chinese goods, making minor modifications to them and then exporting them to the US at lower tariffs than what Chinese goods would have faced. अगर China directly इनको export कर रहे हैं तो US, so उस time तो US tariffs would be much higher, but just because we are having a like other countries are exporting, so that's why the tariffs are much less. So that is what they are talking about here. ठीक है. The fact that Chinese imports from significant pillar of Indian manufacturing is no secret. Yet the nature of these importers slowly changing क्योंकि India is gradually moving away from importing finished products, making cosmetic changes and selling them. Instead, India is what doing right now? The share of intermediate goods in Indian imports from China has been steadily rising. So जो हम China से ले रहे हैं, that is like finished goods हम नहीं ले रहे हैं, simply we are taking the intermediate goods and we are producing things from here within India, ठीक है. So that is India is doing much of its own, okay, that is India is doing much of its own assembly and manufacturing in several sectors, now relying on China and other countries for the parts needed, ठीक है. This shift is an important step towards full scale manufacturing in India. So right now, early पहले हमने क्या किया था, फिनिश्ड गुड्स लेके इसको थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस करके हमने एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट इंडिया हैव ग्रोन टिल हियर इंटरमीडिएट गुड्स हम बाहर से पार्ट्स को बाहर से लेके दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड वी आर एक्सपोर्टिंग इट टू अदर कंट्रीज. बट दिस ग्रोथ विल बी वन डे इफेक्टिंग, मतलब और भी हम मतलब और भी वो ग्रोथ हो सकते हैं जहां पर complete product will be, even the capital goods and the intermediate goods will be produced within India, and with complete make in India progress से हम products को export कर सकते हैं, उसी का दिन भी आ जाएगा. So the growth is showing that only, ठीक है. And the US has not yet announced punitive actions based on its assessment of the apartment Chinese tariff evasion, though that eventually is conceivable. And however, should it do so, India must resist bowing to US pressure on this issue, as even the government has admitted Chinese imports right now are an important part of the Make in India story. So what we have to do is जो भी sanctions और जो भी वो high pressured decisions that or actions that has been put forth for India by US, we should not be bow down, because Make in India progress के लिए Chinese products are important because they are much cheaper and also they are much viable as well, ठीक है. So उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we should negotiate. So always saying yes is not a solution, you have to negotiate and you have to put forth your things also, right? So just because to have a good relation with US, I cannot make my Indian people suffer, right? So यहाँ पर employment होना चाहिए, यहाँ पर growth भी होना चाहिए. So that's how I would be able to have a good relation with you, right? So उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अच्छा सा प्रोग्रेस करना देना पड़ेगा. वो प्रोग्रेस के लिए वी नीड द like other goods that are impacting or other goods that are like actually helping the manufacturing sectors, which is from other countries. One among them is good morning Debas, ठीक है. So one among them is Chinese products, ठीक है. So also, in 2018, India cut these tariffs to 50% from the earlier 60 to 75% and then cut them further to 40%. Similarly, it slashed the import duties on shrimp feed and its components in the February 2024 budget. And also, a key ask of the US, it did the same with tariffs on frozen duck and turkey. The pressure of the 50% punitive tariffs pushed India to diversify away from Russian oil, ठीक है. So despite India's stringent claims of energy sovereignty and the discount was
receiving. So it is about a story जहाँ पर हम कोई भी चीज, ठीक है, सो रशियन ऑयल खरीदने में भी इन्होंने सैंक्शन डाल दिया, राइट. इसके अलावा भी हमने ले लिया, सो दे हैव इंक्रीज द टैरिफ्स फॉर इंडियन गुड्स, स्पेशली फॉर द फ्रोजन टर्की एंड द डक, राइट. सो दीज आर द थिंग्स दैट इज शोइंग दैट समटाइम्स यू हैव टू नेगोशिएट, ठीक है, एंड उसका एक्शंस हो सकते हैं, बट स्टिल यू हैव टू लाइक नेगोशिएट एंड यू कैन गो फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स एज वेल, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट इट. सो अभी तक फिलहाल के लिए कुछ इन लोगों ने कुछ टैरिफ लाइक दे डिडंट अनाउंस एनीथिंग, बट इन केस वो होंगे तब भी हम रेडी होना चाहिए, ठीक है. चलिए इसको, ये छोटा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म कर लेते हैं. विच इज ब्रिक्स कॉल्स ईयूज कार्बन टैक्स प्यूनिटिव एंड यूनिलेटरल. सो यहाँ पर क्या हो गया था, इंडिया लाइक कंट्रीज स्पेशली, पहले हम ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है. ब्रिक्स में जो वो 12th समिट हुआ था अभी हेडेड बाय इंडिया, ठीक है. सो उसमें क्या हो गया, दे हैव सेड दैट ईयू का जो भी वो कार्बन टैक्स है, अगर आपकी प्रोडक्ट जो भी ईयू यूरोप में यू आर लाइक एक्सपोर्टिंग, ठीक है, सो इफ दैट प्रोडक्ट इज हैविंग हायर कार्बन एमिशन एंड इफ दे आर प्रोड्यूस्ड विद हायर कार्बन कंपोनेंट, ठीक है, सो उस हिसाब से उसके लिए आप टैक्स भरना पड़ेगा. सो इन केस ओके, अगर हम देखेंगे तो दिस काइंड ऑफ कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स विल बी मेजरली ऑफ स्टील, iron, okay, and fertilizers, the cement, all these kind of products will be having higher carbon emission and also higher carbon component, right. So हमें क्या मिला, कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट से, CBAM से हमें ये मिला था कि लाइक whenever there is a higher carbon products are being exported, उसके उस हिसाब से you have to give the tax, right. So the one of the thing that have been discussed in 12th BRICS environment meet here is, ठीक है, इस बार शेयर्ड बाय इंडिया. सो वहां पर डिस्कस हुआ है जो भी ईयू का वो कार्बन टैक्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, दैट इज बीइंग यूनिलेटरल, क्योंकि ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. क्योंकि व्हाई इट इज यूनिलेटरल, ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी जब उनको डेवलप होना है उस टाइम दे हैव इमिटेड सो मच एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर ऑल दोस ग्रीन हाउस गैसेस immensely, right. So already they have contributed so much of greenhouse gases and now it is been okay paid by the developing nations. या तो हमारे पास क्लीनर एनर्जी का टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, आपने बोला था उसका हेल्प करेंगे, दैट इज वेल एंड गुड, बट टिल देन इफ यू आर गिविंग पुटिंग मोर एंड मोर टैरिफ्स ऑन द गुड्स दैट वी आर एक्सपोर्टिंग, देन हाउ कम इट इज गोइंग टू फीसिबल फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज. सो दिस इज व्हाट द क्राई ऑफ आवर ब्रिक्स कंट्रीज. सो यहाँ पर क्यों हम क्राई बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी वैलिड थिंग, but very valid statement that has been put forth, but it has not been accepted by those countries who have been already developed. पहले ये हुआ था, global south will be generally, the developing countries will be paying more for दिस कार्बन एमिशन, क्लाइमेट चेंज को जो भी हम प्रोटेक्ट करना है, राइट. सो उसमें वो कॉम्पनसेशन और द अमाउंट, ओके, द फंड दैट वी हैव टू, द डेवलपिंग कंट्रीज हैव टू गिव मच बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग इट राइट नाउ, ठीक है. इनकी डेवलपमेंट के लिए उन लोगों ने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दैट इज क्रिएटिंग द ह्यूज कार्बन एमिशन एज वेल. सो उस हिसाब से उन लोगों को पे करना पड़ेगा. बट इफ यू सी द रियलिटी, ऑलरेडी जो अभी क्लाइमेट चेंज का और टेम्परेचर चेंजेस एंड द कार्बन, द ग्रीन हाउस गैसेज दैट हैव बीन एमिटेड एंड इट इज इन द ग्लोब राइट नाउ, ठीक है, उसका मेजर रीजन है डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी हैव contributed enough for the greenhouse emission. But now when the developing countries are stepping into it and when they are producing the goods, now the carbon emission has been these developing countries are asked to pay for those carbon emissions,
right? So it is what somewhere you have already did things and you got the like advantage also, and now you are asking the developing countries to pay. That is not the equitable way, but it is being very unilateral. So one among the like India's perspective यहाँ पर ये है कि India exports steel and iron majorly to whom? The European Union, right? So यूरोपियन यूनियन को अगर हम स्टील एंड आयरन विच इज कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हम वो दे रहे हैं, तो उनके लिए इन्होंने हेवियर टैक्सेस लगा रहे हैं, राइट? सो दीज काइंड ऑफ हेवियर टैक्सेस कहीं ना कहीं आपको कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहे हैं, वेर यू हैव प्रॉमिस्ड लाइक डेवलपिंग कंट्रीज को क्लीनर टेक्नोलॉजी और we will be help them for the actions against climate change. So wo support ko it is contradicting, because we are developing right now only. When you push us down with all this heavy tariffs, that is giving us a very narrow pathway to grow. Okay, so this is the demand of this is the step taken by the BRICS. This is a statement that has been said by whom? The BRICS countries. ठीक है, clear till now? So this is a major chunk that you have to understand. So first thing is about carbon border adjustment mechanism, जहाँ पर you will be paying higher taxes for higher carbon emission products, right? As the EU system of imposing a carbon related charge on carbon intensive imports entering the European market. And also its main objective is to prevent carbon leakage, where industries shift production to countries with weaker environmental standards to avoid carbon cost. India के लिए क्या दिक्कत है? Iron and steel are particularly important, accounting for around 90% of India's exports to the EU, covered by CBAM. So higher taxes we have to pay. And CBAM may create short-term pressure on India's exports, but India's long-term response should be to make India industry globally competitive through low carbon production rather than merely opposing carbon border measures. जहाँ पर हम cleaner energy से we have to work upon producing the products. So that would be our long term goal. ठीक है, अभी CBAM के वजह if we have stopped our production and if we are not moving towards the feasible one, that is setback for India. Clear till now? Is there is any doubt? चलिए, the last one is about beyond America. So यहाँ पर क्या हो गया है? This editorial is talking about one particular thing, which is हमारी इंडिया हमारी वेस्ट एशियन नेशंस पे, ठीक है, यूएस बेसिस बहुत जहाँ पर रहता, राइट? सो बट व्हाट इज द मेजर इश्यू दैट हैपेंड हियर इज वन थिंग, ओके? सो यूएस और ईरान के लिए जब वो वॉर शुरू होने के पहले, ठीक है, who was the negotiated person, which is ओमन, ठीक है? बट यूएस ने अभी बोला है ओमन के ऊपर हम बॉम्बिंग्स करेंगे. द प्रॉब्लम इज कि it is showing that US is losing its place in West Asia and इनका security like yesterday also we have said like कि American bases वहाँ पर है, security forces वहाँ पर है, so the security is based upon US there, right? So but by seeing this, okay, the threat that have been given to Oman by US for bombing, ठीक है, when they have lost, क्योंकि ईरान मतलब विथस्टैंड कर लिया उन्होंने, दो बार बॉम्बिंग कर लिया था यूएस ने, बट ईरान हैव like withstand all those bombings, so that escalated the agitation and that eventually created what ओमन को उन्होंने अटैक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? So which is showing that the globe is again going towards a conflict era again, okay? This time it could be, okay, it may be against Oman by US. And also क्या प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहे हैं, इट विल लाइक जैसे कि ईरान ने सारा यूएस बेसिस को अटैक कर लिया है, बाकी जो साथ में अरब कंट्रीज में, राइट? सो
after this, if Oman is also going with this kind of wars, then US will not be like US security forces will not be needed in West Asia. They will be taking care of their own, क्योंकि eventually Oman also will be stabilizing or sanitizing these US bases in that area, so they will be losing out their bases as well. ठीक है, so this is what they have talked about here. इन लोगों ने बहुत चीज यहाँ पर बता दिया कि सो वन अमंग देम इज लाइक बिफोर वॉर शुरू होने के पहले ओमन ने ही वो टॉक्स इनिशिएट किया है, एंड बीच में वो जब वो वॉर हो रहा था उस टाइम पाकिस्तान ने किया, राइट. सो बट इसके पहले क्या हो गया यहाँ पर, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फॉलिंग हमें दिख पा रहा है व्हेन इट कम्स टू वेस्ट एशिया. सो द आइडिया ऑफ स्टेबलाइजिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग द वेस्ट एशिया विद whom the US with US का जो भी वो बेसिस हैं, एलीज हैं, राइट. सो उसी एलीज पे ही अटैक हो रहा है, तो देन दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग अटैक इन, राइट. सो दैट इज व्हाट द मेजर थिंग. सो पर्शियन गल्फ में जब भी वो ब्लॉकेड हुआ था, राइट. सो जब ब्लॉकेड हुआ था, इट वाज लाइक डिस्टर्बिंग द ऑल ओवर ग्लोब, लाइक फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी and also for the oil disruptions, and everything was happening because of the Strait of Hormuz have been blocked by Iran, right. So जहाँ पर ये हो रहा है, the whole globe is suffering, still US was with standing with its interest कि मैं ईरान को अपनी the pro US गवर्नमेंट को ही लेके आना पड़ेगा, वही आइडिया से इन्होंने किया था, right. So now it is targeting on Oman. Let's see, most probably they will also be withstanding, and it may reduce the influence in West Asia. US का influence इसको थोड़ा बहुत इन्होंने कम कर देंगे, क्योंकि unnecessarily this kind of actions are being taken that will be creating a chaos over there. ठीक है, so अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देके we should not be stopping हमारी इन्वेस्टमेंट और द रिलेशन विथ वेस्ट एशिया, हमें स्टॉप नहीं करना है. धीरे 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 वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि पाकिस्तान भी अभी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, बिकॉज दे आर मोर इनटू, ठीक है. सो अब इनके अंदर बहुत ज़्यादा केओटिक सिस्टम्स हैं, देयर वेर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स देयर गोइंग ऑन बट विद इन देमसेल्फ, बट now they are moving themselves towards what, the diplomatic relations with the other countries, right. They are right now opening up with Turkey, Saudi Arabia, US के साथ तो ऑलरेडी है, चाइना के साथ भी ऑलरेडी है, right. And they are trying to intrude with Bangladesh also. So all these are happening, and this shows हमारी इंडिया को like not immediately react करना है, लेकिन धीरे धीरे हमें भी react करना ही पड़ेगा. like धीरे धीरे we have to take the steps towards the relation that have to be secured and maintained with other countries in the globe. ठीक है, so यहाँ पर उन लोगों ने क्लियरली ये बता दिया कि यूएस का जो फॉल है ईरान के सामने, बिकॉज सी डिस्ट्रक्शन ईरान में ज़्यादा है, इनका लाइक सुप्रीम लीडर हैव पास्ड अवे, एवरीथिंग वाज हैपनिंग, बट स्टिल ईरान ने अपनी गवर्नमेंट को छोड़ा नहीं, राइट. सो Iran is not replaced with the US pro government, so that agitated US and that is creating nexus. So बहुत ज़्यादा चीज़ेस हुआ था, एलिस को अटैक कर लिया, लेकिन इन लोगों ने अमेरिकन बेसिस को अटैक कर लिया, ईरान बाय रिटेलिएटिंग इट एंड थिंग्स, राइट. सो दीज आर थिंग्स दैट इज शोइंग US is not being seen as a security forces there, instead it is something else right now. So like West Asia को अभी US का necessity चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसराइल भी यूएस का बात सुन नहीं रहे हैं, राइट. जो पालस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, और इसके अलावा गाजा में जितना भी हो रहे हैं, राइट. सो ऑल दीज आर लाइक इसराइल इज ऑपरेटिंग ऑन इटसेल्फ, एंड यूएस का बात भी वो सुन नहीं रहे हैं, एंड बाकी अरब कंट्रीज दोस हु हैव द मिलिट्री बेसिस of US, that has also been almost cleared by Iran, and they are not going much with US relations. So यहाँ पर धीरे धीरे US is losing out its roots in West Asia, ठीक है. So this is what they have talked about. Maybe okay, गल्फ कंट्रीज में एक रीऑर्डर भी आ सकता है, जहाँ पर बाकी सब लोग यूनाइट होके यूएस को भी मतलब सामने
they can become against US. ठीक है? Whether he acknowledged America's growing limitations in West Asia or not, countries in the region confront a new strategic reality where the foundations of the old security architecture have been shaken, which is US का basis. ठीक है? In their hour of need, American bases have turned out to be a liability. They should also recognize that the decades-old policy of containing Iran has failed. To ensure their own security and regional stability, the Persian Gulf countries need to look beyond the American security umbrella and lay the foundations for a new regional order shaped by a cold peace between the Arab states and Iran. So, क्या करना पड़ेगा? They have to take care of their own security and they should not be like expecting US security forces anymore. ठीक है? So that's it for the day. If there is any doubt, please let me know. ये PDF जब भी आपको अपडेट हो जाएंगे उसमें ये क्वेश्चंस भी ऐड करके दे देंगे हम, उसको प्रैक्टिस करके आप री अपलोड कर लेना. We will see the answers. ठीक है? Clear till now? Is there is any doubt till now? अगर कोई भी डाउट है और if you have any issues, please let me know. Otherwise, we will wind up the session. बाकी प्लीज रीड योर न्यूज़पेपर, वो पढ़ते रहना. यू कैन नॉट स्किप दैट रीडिंग न्यूज़पेपर. रीडिंग हैबिट्स आपके लाइफ में होना चाहिए. एंड इसके अलावा लाइक जस्ट स्टार्ट राइटिंग एंड छोटा बहुत हिंट्स जैसे लिख देना. ठीक है? वेन एवर यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ वॉर्स, ओके, स्पेशली वेस्ट एशियन थिंग्स एंड लाइक वेस्ट एशियन वॉर्स के बारे में अपडेशन जो भी आ रहे हैं, प्लीज एक बार एड ऑन करते जाना. ठीक है? सो दैट विल बी गिविंग ए कॉम्प्रहेंसिव रिविजन नोट्स एट टाइम्स. ठीक है जी, चलिए. थैंक यू अरविंद, थैंक यू शॉन एंड थैंक यू एवरीवन for joining. We will see in the next session. Till then, take care and please do read. Reading habit को छोड़ना नहीं. ठीक है? Thank you so much. All the very best.